this is all I do. What you see, it's a very well-paying job, so I don't need to work. Basically, I always hated desk jobs. I mean, some people like it. That's their choice. It wasn't mine, to be honest. And I always wanted to be financially independent in a way where I don't have to wake up because someone else wants me to wake up in the morning. I really can't do that. So the feeling was there, the urge was there to get out of this cycle, 9 to 5, रोज सुबह जाना, ट्रैफिक में फंसना, बुरा मूड लेके ऑफिस में जाना, फिर बुरे मूड में काम करना, फिर उसका वो रिजल्ट नहीं आया, टारगेट्स मीट नहीं हुए, फिर 8 अलग अलग बॉस, लाइन मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, HR, सबकी ईमेल्स, ये वो, एंड देन यू गो बैक, वापस घर आओ, शारे फैसल पे ट्रैफिक है, रोड खुदा हुआ है, प्रोटोकॉल जा रहा है, ये जा रहा है. दिस इज़ नॉट हाउ आई थॉट आई शुड लिव माई लाइफ. सो आई ऑलवेज वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह I found a way not to be continuing to do that. So far so good. It's working out, and I'm happy. I wake up whenever I want. I travel whenever I want. I don't have to write applications कि बहुत छुट्टी चाहिए, दादा मर गए 8वीं बार. You know, I don't have to do that anymore. I like दिल करता है इस्लामाबाद चला जाता हूँ, लाहौर चला जाता हूँ, या कहीं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ. So yeah, this is the ideal life. This was goals for me, and alhamdulillah, things are working out fine. I mean, why should I care? Why should he care or she care? तो मैं ये चीज़ें नहीं सोचता, और मैंने ये चीज़ बहुत पहले छोड़ दी थी कि लोग क्या सोचेंगे. टू बी ऑनेस्ट, वो एक लकीर होती है जहाँ पे हम सारे रुके हुए हैं कि लोग क्या सोचेंगे. एक तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग होते कौन हैं, मतलब कौन है ये लोग, है ना, समझ. दूसरा ये कि उनके कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है हमें, क्या कैंसर हो जाता है, मर जाते हैं, क्या होता है. आई कैन रीइटरेट ओनली सो मच कि ट्रस्ट मी, इस बाउंड्री ये जो हमने बनाई हुई है कि लोग क्या कहेंगे, इसके आगे इतना सुकून है, इतना फ्रीडम है. लाइक यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड. और मैं इतना स्ट्रेस फ्री रहता हूँ. उसकी वजह ये है कि मैं सोचता ही नहीं हूँ कि लोग क्या कहेंगे. मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरा बिल थोड़ी भरना है आके, लोगों ने जो है मुझे सौदा थोड़ी ला के देना है, तो मैं क्यों फ़िक्र करूँ. हाँ, और अगर उनकी सोच इतनी छोटी है कि वो बातें बनाएं कि अरूबा ये कर रही है या दानिश ये कर रहे हैं, तो वो उनका मसला है ना, कि उनकी सोच छोटी है. तो जब वो उनका मसला है तो वो मैं अपने ऊपर मसला क्यों बनाऊँ. मैं तो अपना दिमाग खोल लिया, पढ़ लिख के, किताबें पढ़ के, दुनिया से सीख के कि किसी के बारे में इस तरह सोचना नहीं है छोटा. तो मैंने अपने आप को एजुकेट किया, वो भी कर सकता था. तो अगर वो उसने नहीं किया तो वो उसका प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉब्लम मैं अपने सर पे क्यों लूँ. वो उसकी बदकिस्मती है, वो उसमें रहे अपना, तो मैं क्यों अपना खून जलाऊँ. सो प्लीज़ ये सोचना ही छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे. इसके आगे मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी इतनी सफल है, क्या हिंदी में कहते हैं, इतनी सुकून में है. देयर इज़ सो मच फ्रीडम, देयर इज़ नो स्ट्रेस. दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी. दैट्स हाउ आई स्टे कीप माई सेल्फ हैप्पी. टू बी ऑनेस्ट, अब मैं कराची में कहाँ मोबाइल लेके सड़क पे निकलूँगा वीडियो बनाता हुआ. यू नो, डर ही लगे रहेगा इन द बैक ऑफ माई हेड. और अगर आपका माइंड ऑक्यूपाइड होगा इस चीज़ में कि यार पीछे से बाइक आ रही है, तो नेचुरली वो फ्लो ही नहीं निकल पाएगा. विच इज़ वाई यू सी मी इन माई रूम मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हाँ, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, उसमें ये कि आई वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स एंड आई डू, एंड आई डोंट केयर कोई अगर देख रहा है. व्हाट आर द चांसेस ऑफ मी मीटिंग दैट पर्सन अगेन एवर. कोलैबोरेशन तो इस बिज़नेस का हिस्सा है, आपको करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ. यू नो, यू बाउंस आइडिया, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है, अपना स्टाइल होता है. आई हैड दिस आइडिया एंड आई हैड बिलीव्ड के मोरो would be the right person to execute it exactly the way I want, exactly the way I want it to look like, and he did a wonderful job, as you saw in the video about blasphemy. बाकी ये कि obviously we all have our own schedules. We have a lot of ideas, but it's just that we can't find time because you know he's traveling all the time, I'm traveling all the time. उसके अपने चल रही हैं चीज़ें, मेरी अपनी चीज़ें चल रही हैं. As for the projects, I'm getting more involved with events.
अभी हमने एक अनाउंस किया है क्रिकेट मैच। हम लोग जितने भी ये ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ हैं, आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ अ सेलिब्रिटी बट लाइक यू नो कंटेंट क्रिएटर्स, हम लोगों ने 8 टीमें बनाई हैं, तो उसका हम एक नॉकआउट इवेंट करने जा रहे हैं बिकॉज यू नो ऑल द क्रिकेट इज़ कमिंग टू लाहौर, देयर इज़ नो क्रिकेट हैपनिंग इन कराची, सो दिस इज़ लाइक अ मेयर अटेम्प्ट। ऑब्वियसली मैं कोई इंग्लैंड की टीम तो हूँ नहीं, या मैं कॉलिंगवुड तो हूँ नहीं, मगर एक छोटी सी अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द पीपल ऑफ कराची। तो we're putting up this event, इंशाल्लाह end of October we'll have this. We're in the process of organizing it. So that's something I'm involving myself with. Also, as you can see, this library, this is just one. I want to replicate the same idea in different parts of Karachi and also different parts of Pakistan. I have a couple of places in mind in Karachi. एक गालिब लाइब्रेरी है नाज़िमाबाद में, वहाँ पे आई वांट टू मेक अ सेक्शन ऑफ इट। एक कोवर्किंग स्पेस है PCHS में, आई एम सपोज टू गो देयर एंड चेक दैट प्लेस आउट, ताकि वहाँ के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ऑल्सो इन इस्लामाबाद नियर जिना एवेन्यू, आई थिंक सेनेट के पास देयर वाज दिस ऑफिस दैट आई सॉ, वहाँ पे भी इसका हम एक ब्रांच आउट करना चाह रहे हैं। सो लाइक यू नो आई लाइक टू कीप माई सेल्फ बिजी विद ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, इट मेक्स मी फील यूजफुल बेसिकली। You know, it's very risky to move jobs in Dubai because there are a lot of fake companies there who promise you a lot of things and then at the end they don't provide you visa, or like they ask for money, whatever it is. You tend to make mistakes at every age. I resigned from one job and because I was offered another job, so I resigned from this job, and when you resign from a job you resign your visa as well because वहाँ पे employers visa देते हैं। So when I was supposed to move to the other one, like there was some crisis, economic crisis वहाँ पे थोड़ा बहुत आ गया था, so they were like okay we're not hiring now, but I had already left my job for this one, तो मैं वो बीच में फंस गया and for the longest time I couldn't find a job, and it's a very expensive city, and you can't live beyond your means, not that I was, मगर ये कि अगर if you're not making a lot of money और थोड़ा 1-2-3 महीने का ब्रेक आ जाए income में, तो you can get into a lot of trouble. So I ended up losing my apartment because I couldn't pay the rent. So for a while I was living in my car and I was using my friend's washroom, जब वो सुबह वो और उसकी बीवी ऑफिस चले जाते थे, फिर पीछे से जाके मैं यूज़ करता था, खाना वाना मेरे लिए रखा होता था। So those were some tough times, but ये कि I had seen worse times than that. तो मुझे कोई इतना वो नहीं हुआ बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ये तो चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें हैं, सो यू नो आई बस ये दुआ होता था, दुख बहुत होता था कि यार आई एम 31, उस वक्त पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है कि 31 पे आई एम स्टिल मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैव लाइक ग्रेट जॉब्स एंड लाइक दे हैव kids growing up, तो अब naturally you tend to compare yourself with others, not that you should, लेकिन naturally वो feeling आ जाती है यार कि मैं इतना loser क्यों हूँ। So the thought used to depress me a lot, and but then I got a job, और फिर like छोटे मोटे gigs मैं करता था comedy के, so you know that was good money there. फिर आहिस्ता you know I got back on my feet. फिर I started this job which was my last job in an engineering company. साथ साथ मैं वीडियोज़ भी बनाता था। इनफैक्ट यू नो सम ऑफ माई वीडियोज़ इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम 2 years ago were made in my car. That's because I was living in it and I knew कि I can't change my situation right now, but I can make some people laugh, so why not do that. तो उससे ये होता था कि मैं अपने आप में ऑक्यूपाई हो जाता था और मेरा ध्यान थोड़ा बढ़ जाता था कि यार मैं गाड़ी में क्यों रह रहा हूँ। सो यू नो गाड़ी में बैठे बैठे कोई भी आइडिया आया तो वीडियो बना दी, और फिर करीब के किसी रेस्टोरेंट का वाईफाई जो पहले से सेफ था वहाँ से बैठ के अपलोड कर दी। पीपल यूज्ड टू राइट इट वाज सो फनी, मेड माय डे एंड डा। तो यू नो आई यूज्ड टू फील यूजफुल कि चलो यार मैं अपने तो सिचुएशन नहीं बेहतर कर सकता, बट किसी और का दिन तो अच्छा हो रहा है, व्हाई नॉट डू दैट। सो या दैट यूज्ड टू कीप मी गोइंग। I prefer true stories because you know they're very inspirational.
and to believe that something like that actually happened, you know, fiction में तो ये है ना कि आप आराम से लेजी होके देख ले, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, चलो हाँ ठीक है, फैंटेसी है, you know, it's not actually happening or has happened, but like with true stories, it's basically, you know, it gives you a lot of motivation. जैसे there's this movie not many people talk about, it's called October Sky. It came around in 97, 98. It was about a guy who created rocket, जिस रॉकेट में बैठ के हम चांद पे जाते हैं. इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल मूवी. इसी तरह बहुत सारी मूवीज. सो लाइक आई प्रेफर दैट जॉनर. Other than that, if something's good, if you know, something's doing rounds in the box office, so I see that as an entertainment. There's nothing you can learn from. I basically मेरा focus learning ही होता है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ. तो अब ये कि वो कैप्टन अमेरिका से there's nothing to learn, you know. I mean it's obvious कि वही जीतेगा एंड में, you know. तो कैप्टन अमेरिका कैप्टन obvious हो जाता है basically. So yeah, I mean this is good for entertainment, but not something I would die for like some people do. मसला ये है कि हमारे मुल्क में अगर चाय भी बेचनी हो तो वो भी डांस होके बिकती है. तो अब हर चीज़ में अपने डांस ही डालना है, तो बेसिकली यू क्रिएटिंग एन ऑडियंस जिसको सिर्फ डांस ही देखना है. ये कहना कि ऑडियंस को ये चाहिए नहीं, कोई ऑडियंस सड़क पे चल के थोड़ी मांगती कि हमें ये देखना है. आप जितना दिखाते जाओगे वो वही देखेगी. एक ज़माना था टीवी पे साइंस के शोज़ आते थे, ठीक है ना, क्विज़ शोज़ आते थे, बच्चों के क्विज़ शोज़ आते थे. आज आप देख लें 70 चैनल हैं, बच्चों का 1-2 प्रोग्राम आते हैं. 70 चैनल हैं और सिर्फ 1-2 प्रोग्राम, बाकी सिर्फ पॉलिटिक्स. क्योंकि हमारे घरों में भी पॉलिटिक्स है, ख़ानदान में भी पॉलिटिक्स है, हमारे ऑफिस में भी पॉलिटिक्स है, हमारी बातों में भी पॉलिटिक्स है, चाय के होटल पे बैठो वहाँ भी पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स भर के ना आपने अजीब एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है. तो इस तरह की स्टोरीज़ बिल्कुल आनी चाहिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही इस तरह की स्टोरीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं. अब स्वीडन तो पहले ही इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे आपको इस किस्म की इंस्पिरेशन स्टोरी मिलना तो थोड़ा मुश्किल होगा. यहाँ तो हर शहर में आपको इतनी स्टोरीज़ मिलेंगी कि एक साहब ने जो है बिरयानी के ठेले से स्टार्ट लिया और आज उनकी ब्रांचेस ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई हैं, ठीक है. इस तरह की बहुत स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ बहुत हैं. जैसे कि मैं नाम भूल रहा हूँ उस बच्चे का, हु प्रिवेंटेड अ सुसाइड अटैक मर्दान में, उसका नाम याद नहीं आ रहा. सो लाइक उस पर बेहतरीन मूवी बन सकती है. हमारे सोल्जर्स पे बहुत मूवीज़ वैसे बनती हैं, मगर वो एक पर्टिकुलर उनका एक टारगेट होता है. आप किसी की लाइफ पे आप ये बना सकते हो व्हाट मेक्स अ टेररिस्ट, यू नो. वो भी एक स्टोरी है. वो क्या वजूहात होती हैं, वो क्या रीजंस होते हैं दैट प्रोवोक समवन टू पिक अप अ गन एंड यू नो स्नैच मोबाइल. कराची भरा पड़ा है स्टोरीज से, मगर हम लोग जाते ही नहीं. हमें बस वही घूम फिर के डांस करना है, ठीक है. फिर well it's inevitable not to make mistakes at any point in life. That's how you grow, that's how you learn, that's how you move forward. If you look at a baby, they have to fall down in order to learn to walk. So that's natural progression right there. Mistakes, I wouldn't call it. I mean, I would call them the learning phase. So obviously you have to be very careful about what you're joking about, because we live in a society where a wrong quote or a misquote can literally get you killed. So considering that and considering the nuances, considering the sensitivities of everyone, not just one particular section of people, but like people of all walks of life, all types, all races, all religions. So a lot of challenges have been there. So I have learned to be not as offensive as I could have been had I not learned from certain things that I said in the past.